चलो सो आई गेस वी आर डन विथ एफ सी एफ एफ का कैलकुलेशन। अब हम लोग ये एफ सी एफ एफ के कैलकुलेशन से आगे जाएंगे एंड वी आर गोना टेक हाउ टू वैल्यू द शेयर बेस्ड ऑन फुल एफ सी एफ एफ। आपके बुक्स पे अगेन क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 सिर्फ एफ सी एफ एफ पे था। क्वेश्चन नंबर 10, फंडामेंटल्स ऑफ आर एम लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड आर एज फॉलोज, particulars and amount. Sales are 2,400. Operating cost is 800. Capital spending is 600. Depreciation is 360. Change in working capital is 50. KE 20%. Target debt equity 1. Growth 5% per annum forever. 14% perpetual debt 500. The market value of debt is 500 and the current share price is 100. The firm has 10 lakh shares outstanding. The tax rate is 40%. Find out the IV of the share as per FCFF approach. So one was dividend approach and one is FCFF approach. Question number 10. मैंने यहाँ पे सारे चैप्टर्स के नाम हटा दिए। गाइस FCFF अप्रोच से हम लोग पहले वैल्यू ऑफ द कंपनी फाइंड करेंगे। Now value of the company is equal to FCFF 1 upon KC minus G. KC, value of the firm, is equal to FCFF 1 upon KC minus G. FCFF का मतलब है free cash flows for the firm. Now FCF approach में we have FCFF and we have FCFE. FCFF is free cash flows for the firm, so directly value of the firm मिलेगा, इसलिए KC यूज़ करना है। करेक्ट है। मैं ये क्वेश्चन कराने के बाद आपको फर्म और इक्विटी का डिफरेंस दिखाता हूँ, बट ये स्टार्ट करने के लिए भी कहना से हमारे पास FCFF का कैलकुलेशन होना चाहिए। सो आई वांट FCFF। FCFF इज इक्वल टू NOPAT minus NI. So first one is calculation of NOPAT is equal to, if you remember, EBIT minus tax. Sales 2,400 minus operating cost 800, 1,600 minus the depreciation 360. 1,600 minus 360 is equal to 1,240. This is EBIT minus tax straight. I can see tax rate at 40%. चलो guys, 1,240 minus 40%. आपको लिखना नहीं है बट आपको कैलसी हाथ में रखना है। 1,240 into 40% is 496 is the tax minus 1,240. Answer is 744. This is NOPAT minus NI. So second part पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे NI. NI stands for net investment is equal to capital spending minus depreciation plus change in working capital, है ना। capital spending 600 minus depreciation 360 plus change in working capital, is it 50? चलो 600 minus 360 and plus 50 is 290. क्या मिल गया 290 आपको? NI. So I have got NOPAT, I have got NI, so I can calculate something that is known as FCFF. So my FCFF is equal to 744 minus 290 is equal to 744 minus 290 is equal to 454. Clear to good. अब FCFF आ गया तो अब हम लोग जाते हैं सेकेंड पार्ट पे, दैट्स कैलकुलेशन ऑफ KC. चलो गाइस, डू वी नो KC? KC is equal to weighted average cost of equity plus weighted average cost of debt. WTKE plus WTKD, है ना।
WT KE plus WT KD. Too good. Now weights. If you're reading the question well, they told us target debt equity is 1. That means debt is equal to equity. That means weight are 0.5, 0.5. Or you can even say weight is 1 by 2, 1 by 2. Because if debt is 1, equity is 1, total is 2. 1 by 2 is debt, 1 by 2 is equity. And KE is given to you at 20%. KD अगर KE नहीं दिया है तो फॉर्मूला पता है अभी आपको, KE is equal to RF plus beta RM minus RF. KD फॉर्मूला I1 minus T. So पहले हम लोग जाते हैं KE कैलकुलेट करते हैं. KE is equal to 20% given. KD is equal to I1 minus T is equal to 14, 1 minus 0.4. 14.6. 8.4. Now KC is equal to 1 by 2 into 20 plus 1 by 2 into 8.4. 10 plus 4.2 is 14.2%. Now what is 14.2%? That's my KC, cost of capital. पूरा KC क्यों लेना है? Because आपने FCFF लिया है. FCFF stands for free cash flow for the firm. Firm is made up of equity and the debt, and hence we require full KC. Correct? Okay. Now the valuations. First one, value of the firm is equal to FCFF1 upon KC minus G is equal to FCFF 454. Growth 5% forever, 1 plus 0.05 upon KC 0.142 minus 0.05 is equal to, है ना? Okay. 454 into 1.05 divided by 0.092. Answer I'm getting is 5181.52. 5181.52. This is the value of the firm. वैल्यू ऑफ द फर्म आने के बाद हम लोग वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर ढूंढना चाहते हैं. तो गाइस वैल्यू ऑफ द फर्म में से वैल्यू ऑफ द डेट माइनस करेंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगा. वैल्यू ऑफ द फर्म 5181.52 माइनस वैल्यू ऑफ द डेट 500 minus value of the debt is 500 is 4681.52. Value of the debt is a market value of the debt. 14% perpetual debt was 500 और उसके नीचे लिखा था उन्होंने market value of the debt is equal to 500. If you recall guys, सिखाते वक्त भी मैंने आपको कहा है that value of the debt depends upon the rate of interest. This was 14% at 500. Rate of interest changes, debt will change, है ना? एंड प्लीज़ ना अपना वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मैंने तभी भी याद कराया था आपको. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% हो जाए तो बच्चों की तरह नहीं करना कि 14% इज़ 500 तो 13% इज़ कितना. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ पता है, 14% डेट था 500, अब 13% हो गया तो कितना. सो इट्स नॉट 500 इंटू 13 डिवाइड बाई 14, it's actually 500 into 14 divided by 13. कैलकुलेशन करो जरा. ये क्वेश्चन में ऐसा है नहीं पर आपको ध्यान रखना है. एंड आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 538.46. 538.46 है ना. सो व्हाट इज 538.46? कॉस्ट ऑफ न्यू डेट. एंड कॉमन सेंस, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीजेस the debenture or the bond value will increase. और लॉजिक एकदम सिंपल है, तभी भी समझाया था कि 500 है तो 14% भरने के लिए तैयार थे, तो 500 इंटू 14% करते तो इंटरेस्ट मिलता है. डिवाइड बाई 13% करेंगे तो भाई अभी आपको 13% के हिसाब से लोन कितना होगा. सो प्लीज़ एंड प्लीज़ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं. हाँ, सो मैं इसको हटा देता हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन में तो था नहीं. सो आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल गया. नाउ value per share is equal to 4681.52 divided by number of shares, and number of shares
The market value of the debt and the current price of the share is 10. The firm has 10 lakh shares outstanding, 10 lakh. So is equal to 468.152 per share. क्या मिल गया 468.152 per share? Value per share. Chakas? Too good. Quit doubts? Clear. Now that's FCFF approach. अच्छा. Now before I go to the next one, copy करने की ज़रूरत नहीं है guys. So I'll just rub it off. अभी मैं अगर आपको ये कैश फ्लो अप्रोच में लेके आऊँ तो the things that you will have to remember is FCF approach, free cash flow approach. We can work by free cash flows for the firm and we can work by free cash flows for equity. यहाँ पे फर्म के लिए कैश फ्लोज ढूंढना है, यहाँ पे इक्विटी के लिए कैश फ्लोज ढूंढना है. फर्म के लिए कैश फ्लोज ढूंढने के लिए आई रिक्वायर NOPAT माइनस NI, NOPAT minus NI, NOPAT, net operating profit after tax minus NI. EBIT से टैक्स हटा देना, इंटरेस्ट माइनस नहीं करना है. लॉजिक समझिए कि यू आर कैलकुलेटिंग कैश फ्लोज फॉर द फर्म, तो डेट भी आपके साथ ही है, आपको इंटरेस्ट उसे पे नहीं करना है. समझा? ओके. एंड FCFE दैट इज फ्री कैश फ्लोज फॉर इक्विटी. यहाँ का कैलकुलेशन होगा पैट माइनस NI, यहाँ पे नो पैट माइनस NI, यहाँ पे पैट माइनस NI, बिकॉज यहाँ पे आप कैश फ्लोज किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हो? खाली इक्विटी के लिए ना. सो ओनली पैट. कॉन्सेप्ट समझा? टू गुड. सेकेंड ना गाइज, यहाँ पे KC और यहाँ पे KE. सो FCFF के टाइम KC एंड FCFE के टाइम KE. अच्छा, then you are gonna get value of the firm minus the value of debt, you are gonna get value of equity. Divide by number of shares, you will get value per share. In this case, you will directly get value of equity because you are calculating on equity only. And divide by number of shares, you will get something that is value per share. So guys, this is FCFF and this is FCFE, if you remember all this that I have taught you during the classroom. Clear? Jakas now? Too good. चलो, तो ये हो गया हमारे मॉडल्स की बातें. आप एक बार वापस स्टेटमेंट पे आ जाइए एंड यहाँ पे मैं इस पे भी टिक मार्क मार दूँ. चलो, तो नाउ इफ यू रिमेंबर वैल्यूएशन मॉडल्स में वी हैड absolute valuations and we had relative valuations. Absolute valuations में we had dividend model and we had FCFF model. Dividend we had constant dividend, constant growth, fluctuating growth. FCFF we had FCFF, we had FCFE. Before I touch that relative valuations, मैं एक और छोटा सा मॉडल लेता हूँ जो मैंने कराया था, अगर आपको याद हो तो, known as ALCA मॉडल. अच्छा, मैं FCFE का कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ फिलहाल. एट द एंड ऑफ वीडियो ऑल्सो आई विल टेल यू, एंड एक छोटा सा शीट भी आपको डाउनलोड करने के लिए मैं दूंगा जहाँ पे मैंने 5-6 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा डाल के रखे अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस. सो आपको सिर्फ उतना प्रैक्टिस करना है. आर वी क्लियर विद दैट वन? बिकॉज आई कैन नॉट एक्सटेंड वीडियो, अदरवाइज यू विल हैव नो टाइम टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन. So I'm just giving you the basics on this video with some good questions also, but plus I'm gonna give you 4 or 5 questions to be solved in that chapter. At the end we'll discuss that. पक्का? Okay. ALCA model की अगर मैं बात कर लूँ guys, so in ALCA model if you remember, हमारे पास एक firm होता है and the firm is no growth firm. Do you remember this model that I told you? And now they are putting in some growth strategy. Currently the firm is no growth, absolutely flat.
and now they are putting in some strategy जिससे firm में growth आएगा. This growth will last for 3, 4, 5 years, but after that the firm will again become no growth. Do you remember that? And the question says find out the value of the strategy. So how do we find out the value of the strategy in this case? Value of strategy in case of Alker, I'm writing Alker again. Value of strategy is equal to value of firm after strategy minus value of firm before strategy. Value of the firm after the strategy minus value of the firm before the strategy. अच्छा, value of the firm before the strategy. Now what is value of the firm before the strategy? Now what's the strategy? No strategy at all. It's a no growth firm. Guys, if it's a no growth firm, then the value of the firm, if I'm not wrong, is FCFF upon 1 भी नहीं आएगा, KC minus G भी नहीं आएगा. Can I say सिर्फ KC आएगा because it's a no growth firm? It's equivalent to that constant dividend वाला मॉडल ना. डिविडेंड ही कांस्टेंट है यार. So dividend constant है तो फॉर्मूला क्या था? वैल्यू ऑफ द शेयर इज इक्वल टू डी अपॉन आर ई. अच्छा, यहां पे क्या आएगा? वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू एफ सी एफ एफ अपॉन के सी. अच्छा, and how to calculate FCFF here? FCFF here is equal to, we used to do this, NOPAT minus NI. If it's a no growth firm, if you remember in these questions, capital spending will be equal to depre. So capital spending minus depre is 0, plus there is no change in working capital because it's a no growth firm. If you're investing anything into the business, there will be growth. If there is a no growth firm, guys, there will be no NI. And now FCFF. What was the formula for FCFF? NOPAT. Sorry, NOPAT. That is EBIT minus tax. So FCFF will be equal to NOPAT. FCFF will be equal to NOPAT. NI होगा ही नहीं, and it will remain constant. This is value of the firm before the strategy. Then we'll have value of the firm after the strategy. Value of the firm after the strategy करने के लिए दो parts again. During the strategy, after the strategy is implemented. मतलब यहाँ पे फिर से constant हो जाएगा वो. And during the strategy, two stage model हो गया ना. The first stage is explicit, the second stage is horizon. Explicit, I'll have to calculate FCFF at every level. In this case, FCFF calculate करने के लिए year 1, year 2, year 3, FCFF is equal to NOPAT minus NI. NI is equal to capital spending minus depreciation. That was equal to change in fixed asset plus change in working capital. Change in fixed asset plus change in working capital is nothing but change in capital employed. So NI is equal to change in capital employed. See, याद कराता हूँ. Fixed asset minus depre plus change in working capital. Change in fixed asset plus change in working capital is equal to change in capital employed. तो यहाँ पे NI will not be calculated by this formula, will be calculated by this formula. And NOPAT will remain same. So you will calculate FCFF 1, 2, 3, present value, present value, present value. And then you will go to stage 2. So if 3 years are explicit, you need to remember value of the firm at the end of 3rd year, not 4th year, 3rd year is equal to FCFF4 upon KC. KC flat because it's become constant again. और फिर मत भूलना तुम्हें उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा V0 करके.
सो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगा डिवाइड बाय 1 प्लस के सी रेज टू पावर 3 ना, एंड देन स्टेज 1 प्लस स्टेज 2, ये दोनों का वैल्यू निकालेंगे तो विल गेट वैल्यू ऑफ द फर्म आफ्टर द स्ट्रैटेजी. वैल्यू ऑफ द फर्म आफ्टर द स्ट्रैटेजी minus value of the firm before the strategy was equal to the value of strategy. Alcor. Recall हो रहा है बरोबर से? Too good. Have a look into your book, guys. मैंने question नहीं दिया है, that's what I'm telling you, but मैंने आपके extra sheet में डाला है. Alcor model. This model is based on value maximization principle. We would be provided with income statement of the firm for the year just ended. Presently, the firm is no growth firm. Capital spending is offset by depreciation and there will be no change in working capital. So NI is equal to nil and therefore FCFF is equal to no PAT is equal to perpetuity. So value of a pre-strategy is equal to, it's not free strategy, it's pre-strategy, no PAT upon KC. The firm is planning a growth strategy which will last for X number of years. Accordingly, we shall calculate the value of the firm which will be equal to stage 1, stage 2, stage 1 and stage 2. Accordingly, the value of the strategy will be equal to the firm after the strategy and value of the firm before the strategy. Are we clear? So that basically completes your entire valuation model. Pakka, guys, that's well work done. Before I take on relative valuation, you can take a 5-minute break and be back again. फिर relative valuation पे जाते हैं और हम लोग chapter change करते हैं. Correct है? But अभी भी equity हुआ नहीं है. Take a 5-minute break. Meet me again. So guys, I hope it's going good and you are able to recall things up. I'll take you to the last part. Basically एक relatives है और एक extra things जो हम लोग ने इस chapter में किया था वो complete कर लेते हैं. It's like another 10-minute job. अब relative valuations अगर आपको याद हो तो we are gonna value our company in comparison with another company. And how to value that is take certain things as base. What we can take as base is we can take asset as base, we can take sales as base, we can take EBIT as base, we can take PAT as base. In simple language, for example, if I want to value my company, my name is RM, so I'll go to a proxy firm, let's say X, involved in same business, और X को जाके पूछते हैं भाई आपका assets कितना है, उसका assets X, उसका business value Y, अपना assets X तो अपना business value कितना. In simple language, cross multiplication. So that's what we are going to do. और इसमें एक बहुत famous question है, अगर आपको याद हो तो करते वक्त बहुत अच्छे discussions भी किए थे इस पे. Something that is known as chop shop approach. है ना? Have a look. Relative valuations. तो मैं यहाँ पे टाइटल पे लिख देता हूँ that हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं. Relative valuations. Now, relative valuation means valuing the firm on the basis of how similar or comparable firms are valued. Comparable firms should be similar in terms of nature and scale. Such valuation uses price multiples. Now it can be price to earnings, it can be price to sales, it can be price to book value, it can be price to free cash flows, it can be price to EBITDA. है ना? That's known as relative valuations. Question number 11. Using chop shop approach or a breakup value approach, assign the value of Cranberry Limited, whose stock is currently trading at a market price of €1,000,004. For Cranberry Limited, the accounting data set forth for 3 business segments: wholesale, retail and general. Data for firm's 3 segments are as follows. Business segment can be wholesale, or business segment can be retail, or business segment can be general. So the company Cranberry is working on 3 segments: wholesale, retail, general. तीनों सेगमेंट्स के सेल्स दिए हैं, तीनों सेगमेंट के सेगमेंट असेट्स दिए हैं, तीनों सेगमेंट्स के सेगमेंट ऑपरेटिंग इनकम दिया है. सो दे हैव गिवन यू सेल्स ऑफ ईच ऑफ द 3 सेगमेंट्स, दे हैव गिवन यू असेट्स ऑफ ऑल द 3 सेगमेंट्स and they have given you operating income of all the 3 segments. What are we required to do is next part.
Industry data pure play firm are been compiled as follows. Industry data. So wholesale capitalization to sales. Guys, if you remember this word capitalization, it simply means the value of the firm. So value of the firm to sales is 0.85. So if the industry has a sale of 1, the value of the firm is 0.85. And similarly, they have given you capitalization for wholesale, retail, general, for sales, for assets, for operating income. एकदम सिंपल सा है, रिलेटिव वैल्यूएशंस है. होलसेल सेगमेंट की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. होलसेल सेगमेंट की अगर आप बात करें तो बेसिस ऑफ सेल्स, द सेल्स ऑफ क्रैनबेरी are 2,25,000 euros and capitalization is 0.85. If the sales of the industry are 1, market value is 0.85. So if sales of cranberry are 225, how much is the market value? In simple language, is it 225 into 0.85? फिर से एक बार अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो सेल्स वैल्यू, सेल्स 1, वैल्यू 0.85, तो सेल्स 225, वैल्यू कितना? 225 इंटू 0.85 डिवाइड बाय 1. Simple cross multiplication. So that's I'm saying 225 into 0.85, and the value that I'm getting 225 into 0.85 is 1,91,250. So value of the wholesale segment of cranberry based on sale is 1,91,250. But guys, they are not only working on sales, they have given you information on assets also, they have given you information on operating income also. So based on assets of cranberry are 6 lakh and capitalization is 0.7. So 6 lakh into 0.7 is equal to 4 lakh 20. On based of operating income, it's 9. So operating income at 75,000 into 9 is equal to 6,75,000. And see the difference in values of the firm that you are getting. And that's why this question is very intelligent. अलग अलग बेस पे काम कर रहे हैं तो अलग अलग वैल्यूज आ रहा है. बिकॉज यू नो फर्म कैन डिफरेंशिएट वन फ्रॉम अनदर, है ना. तो उन्होंने सेल्स के बेसिस पे कैलकुलेट किया तो वैल्यू ऑफ द फर्म सिर्फ 191 आया. असेट्स के बेसिस पे कैलकुलेट किया तो वैल्यू 420 आ गया. ऑपरेटिंग इनकम पे कैलकुलेट किया तो वैल्यू 675 आ गया. और कंपेरेटिव ही कर रहे हैं. तो इंटेलिजेंस क्या है इस क्वेश्चन में? दैट दे हैव नॉट टेकन वन थिंग एज बेस, दे आर गिविंग यू 3 थिंग्स एज बेस. अच्छा, वन मोर थिंग दैट दे आर नॉट गिविंग यू इज किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है. उन्होंने दिया ही नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे. सो वी टेक अ टोटल ऑफ ऑल 3 एंड डिवाइडेड बाय 3. सो 1,91,000, मैं आंसर्स चेक कर लेता हूँ. 225 into 0.85, is it 191,250? 6 lakh into 0.7, is it 420? 75,000 into 9, is it 675 plus 420 plus 191,250 divided by 3? I'm getting 4,28,750. 428,750. बुक में भी वही आंसर है. ये होलसेल सेगमेंट का वैल्यू निकाला. वैसे ही हम लोग वैल्यू निकालेंगे रिटेल का बेस्ड ऑन सेल, बेस्ड ऑन असेट, बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग इनकम. वैसे ही हम लोग वैल्यू निकालेंगे जनरल सेगमेंट का बेस्ड ऑन सेल, बेस्ड ऑन असेट, बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग इनकम. बेस्ड ऑन सेल, चलो कैलकुलेशंस लिख देता हूँ, फिर कैलसी हाथ में लूँगा. आप भी कैलसी हाथ में रखो. 7,20,000 फॉर जनरल, 25 lakhs for general. 720 was for retail and 25 lakhs was for general. Assets 5 lakh. Operating income 1,50,000. Assets 40 lakhs. कॉमर्स में थोड़ा एरर है, ध्यान दे देना. एंड ऑपरेटिंग इनकम 7 लाख.
and capitalizations are retail का 1.2 on asset, general का 0.8, retail का on asset is 0.7 and general का on asset is also 0.7, retail का is 8 and general ka is 4. So now the calculations, guys, 720 into 1.2, 8,64,000, 5 lakh into 0.7, 350, and 1,50,000 into 8, 12 lakh, plus 350 plus 864 divided by 3, answer is 8,04,667. Chalo, 25 lakhs into 0.8, 20 lakh, 40 lakh into 0.7, 28 lakh, 7 lakh into 4, 28 lakh, divided by 3, 28 lakh, 28 lakh, 20 lakh, divide by 3, 25 lakh, 33,333 total, plus 8,04,667 plus 4,28,750. I'm getting a total of 37 lakh 66,750. That's the value of cranberry, relative valuation of cranberry. And this question is very famous. In case even if you're looking at my videos for the first time, this is like done, because every classes has this book. Clear? Anyways, this is relative valuations. I hope you understand this relative valuations also. It's like valuing company X in comparison with company Y. पक्का? एक और छोटू सा concept before I complete this chapter, guys. The concept is known as EVA and the concept is known as MVA. EVA is economic value added, MVA is market value added. EVA, economic value added, is equal to NOPAT minus KC. NOPAT, I guess we seriously know what is NOPAT now. Net operating profit after tax, that is NOPAT, minus KC, that is cost of capital. Correct? NOPAT minus KC is equal to EVA. KC not in terms of percentage, KC in terms of amount. अच्छा, उसके अंदर भी मैंने एक क्लासिक क्वेश्चन लिया है, रेसिडुअल अप्रोचेस में EVA. Question number 11. Calculate economic value added with the help of following. Financial leverage 1.4. Now this is what I say classic. FL दिया हुआ है, IPCC, right from the IPCC modules. EBIT upon EBT. Capital structure, equity 170 lakhs, reserves and surplus 130 lakhs, 10% debentures 400 lakhs. Cost of equity 17.5%. Income tax rate 30%. And आपको calculate करना है EVA. EVA is equal to NOPAT minus KC. I'm looking at question number, ये 12 हो जाना चाहिए था, आपके टेक्स्ट बुक्स में 11 ही दिया है, but this is effectively question number 12. Perfect. First one, क्या calculate करना है? NOPAT. उन्होंने आपको FL दिया हुआ है is equal to 1.4. FL is equal to EBIT upon EBT is equal to 1.4. पक्का? बट हमारे पास EBIT भी नहीं है, EBT भी नहीं है. Only thing that you have here is ना interest. So इस EBT को ब्रेक करता हूँ. EBIT upon EBIT minus the interest is equal to 1.4. So EBIT नहीं है, EBIT नहीं है, but interest है. So EBIT upon EBIT minus interest
400 lakhs का 10% debenture is 40 is equal to 1.4. So EBIT is equal to 1.4 EBIT minus 40 into 1.4. 40 into 1.4. I'm getting 56. 1.4 EBIT यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस कैंसिल. सो EBIT will be equal to 56 divided by 0.4 सिर्फ, है ना? 56 divided by 0.4. I'm getting 140 माइनस टैक्स. क्वेश्चन में 30%. 140 का 30% is 14, 14, 28 and 14, 42. So we get something that is 98 is no bad. Jakas, too good. Minus KC. Statement 2, पहले KC in terms of percentage ढूंढना है. तो पहले KE, if I'm not wrong, question में दिया हुआ है 17.5%. KD is equal to I1 minus T. I is 10%. 10, 1 minus 0.3 is equal to 7%. That's KD. KE given to you, KD given to you. So now we can calculate KC is equal to weighted average cost of equity plus weighted average cost of debt. WTKE plus WTKD. Weights. Equity 170 plus 300. 3 plus 130. Total 300. Debenture 400. 300 plus 400, total 700. So equity 300 upon 700 into 17.5 plus 400 by 700 into 7%, that is 7. Calci everybody please. Please ये videos देखने पे ऐसा नहीं कि तुम शांति से बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हो. We are on the verge of examinations. You need to have your calculations strong. I need calci on everybody's hands. 300 by 700 into 17.5 and 14, that is 400 by 700 into 7. Your answer is coming at 11.5%. That's KC in terms of percentage. Third one is KC in terms of amount. That is 700 into 11.5%. If you don't believe, see, I am also working at Calci. That is 700 into 11.5% is equal to 80.5. That's my KC in terms of amount. Finally, EVA is equal to NOPAT 98 minus 80.5 is equal to rupee 17.5 lakhs. Rupee 17.5 lakh is EVA. Check the answers. Answer is 17.5. Class. Chakas. Perfect. Too good. Now let's recall all things that we have done in this chapter. यहाँ पे आ जाते हैं. First one, पूरे formulas फटाफट. Absolute relative clear dividend, constant dividend. IV is equal to D upon RE. RE का फॉर्मूला RF प्लस बीटा RM माइनस RF. RF का फॉर्मूला FE माइनस P अपॉन P इंटू 100 इंटू 365 बाई N. बीटा रिकॉल लिस्टेड अनलिस्टेड. लिस्टेड होगा तो कोव XM अपॉन वेरियंस ऑफ मार्केट. अनलिस्टेड होगा तो प्रॉक्सी फर्म डी लेवरेज री लेवरेज. प्रॉक्सी फर्म डी लेवरेज का मतलब है बीटा ऑफ अनलीवर्ड फर्म इज इक्वल टू बीटा ऑफ लीवर्ड फर्म डिवाइड बाय 1 प्लस डेट अपॉन इक्विटी 1 माइनस टी. री लेवरेज बीटा ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू बीटा ऑफ अनलीवर्ड फर्म इनटू 1 प्लस डेट अपॉन इक्विटी 1 माइनस टी. RM is equal to dividend yield plus growth yield. RE RF plus beta RM minus RF. G is equal to BR, or you can calculate by SAGR or CAGR. Constant growth IV is equal to D1 upon RE minus G. लोगों को बहुत confusion होता है कि D है या D1 है. Last dividend is D. Expected dividend, expected to pay next dividend is D1.
एक सिली सा एरर आता है एग्जामिनेशन में, कंपनी पेज द डिविडेंड, आप D1 ले लो उसे, करेक्ट. फ्लक्चुएटिंग ग्रोथ, इफ यू रिमेंबर वी हैव स्टेज 1 प्लस स्टेज 2, पक्का. FCFF, FCFE model, free cash flows. FCFF is equal to NOPAT minus NI. NOPAT is equal to EBIT minus tax. NI is equal to capital spending minus depreciation plus change in working capital. फंडा दोनों का सेम ही है. रिलेटिव वैल्यूएशंस, क्रैनबेरी वाला क्वेश्चन याद रखो. एंड फाइनली हम लोग ने कॉन्सेप्ट किया दैट इज नोन एज EVA. कोई डाउट्स आपको? सो आई गेस वी आर डन विद समथिंग दैट इज इक्विटी वैल्यूएशंस. आप अपने शीट्स को चेक करना. अपार्ट फ्रॉम डूइंग दिस 12 क्वेश्चंस विथ मी, आई हैव पुट सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. आपको वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, वो कर लेना. उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट चैप्टर पे जाना. क्लियर? सो दैट्स इट फॉर द इक्विटी वैल्यूएशंस.